यो तो कैसे हैं आप लोग। वापस से स्वागत है आपके अपने LCR गेमिंग 18 चैनल पे। और आज हम लोग वापस से आ चुके हैं वैम्पायर गेम के साथ। तो लास्ट टाइम हमने अपना फर्स्ट बॉस फाइट कर ही लिया था, जिसमें हम लोग बहुत ही आराम से जीत गए थे। और वो बॉस फाइट नहीं थी एक्चुअल में, वो एक स्कार था जिसमें लोग फर्स्ट टाइम रहते। हम लोग पेम्ब्रोक हॉस्पिटल पे आ चुके थे और हमको अपनी आइडेंटिटी भी पता चली थी। और हम एक ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सबसे बेस्ट डॉक्टर थे, हमको ये भी पता चला। और यहाँ पे हमको नर्स क्रेन मिल चुकी हैं, जिनको कुछ बताने को मिला है कि स्वानसे वांट टू रेस्क्यू बट वी हैव समवॉट अ क्राइसिस। यहाँ पे क्राइसिस आ चुकी है। वो क्राइसिस क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। कुछ तो इशू हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर, होते ही होता है भाई, वरना हम क्या इस काम के सारे गेम तो हमको ही करने होते हैं भाई। देयर इज समथिंग नथिंग हियर, द रूम इज अनलिमिटेड, नो एंटीसेप्टिक एट ऑल। ओके, तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में इशू क्या हुआ है कि एंटीसेप्टिक्स खत्म हो चुकी है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ हॉस्पिटल आर यू रनिंग? नो एंटीसेप्टिक्स। माय पॉइंट यही है, लेकिन लिटरली बात ये कि वॉर के टाइम के बाद, वो भी क्राइसिस के बाद तो वहाँ पे चीज़ों का ना होना समझ में आता है। तो यहाँ पे एक इशू ये है कि वो यही चीज़ बताना हमको कोशिश करेंगे। आई थिंक हमको एक टास्क मिलने वाला है, हमको जाके लेके आना है मेडिसिन। तो भाई शुरू करते हैं। और भाई इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका था। भाई चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक मारो वीडियो को भाई। क्या हम लोग नए नए गेम्स के साथ आते ही रहते हैं ब्रो। चलिए गेम पे फोकस करते हैं। गेम के साथ आप भी करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई और गेम की सजेशन जरूर देंगे करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये भी बता दिया करिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट एज सून एज पॉसिबल हम डालने की कोशिश तो करें कम से कम भाई। It's the large building behind the hospital. मोटिवेशन You'll चाहिए, need to go in the back door मोटिवेशन। because it's been sealed off for sanitary reasons. बातें कम और Take काम this ज्यादा। key. चलो भाई, It opens a small हमको back एक entrance at the end of ओपन the एरिया मिला है narrow बैक साइड से, हमको वहाँ से The जाना abandoned होगा। morgue behind the और एक की मिली है मॉर्ग की, Small हमको door. ओल्ड मॉर्ग जाना है, जहाँ पे हमको चांसेस है कि हम कुछ मेडिसिन, हम लोग एक Narrow street. On my way then. ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर Thank you, है, तो nurse. ऑफ कोर्स हमको पता होता है क्या क्या मिला कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग अपना दिमाग यहाँ पे लगा रहे हैं कि जब ऐसे कोई भी हालात आते हैं तो हमको वहाँ से स्केप कैसे करना है, कैसे कोई भी तरह के एंटीसेप्टिक बना सकते हैं। तो लेट्स मूव। और पहले बता दो भाई अगेन एंड अगेन गाइज, मैं ये बता दूं कि हम लोग वैलोरेंट ज़्यादा खेलते हैं, तो हमारी जो सेंसी और DPI है वो काफ़ी उसके बेस पे रिकमेंड सेट होती है एक्चुअल में, कह सकते हैं हम लोग। जिसका इशू कहीं ना कहीं नए गेम जो लोग खेलते हैं तो इसमें होता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ों को इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी फुल ट्राई करते हैं हम लोग अपना कि हम लोग इस गेम को एज सून एज पॉसिबल ख़त्म भी कर ले, क्योंकि ये गेम काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स इस गेम को, लेकिन ये अंडररेटेड गेम रह गया। रीज़न कुछ चीज़ें हैं जो इस गेम में इम्प्रूव हो सकती थी, उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसकी स्टोरी इसकी कुछ ना कुछ इतनी खास निकल के नहीं आती है, लास्ट से हम लोग को पता चलने वाला है जो। और सेकेंड थिंग, इस गेम एज कम्पेयर टू आज की गेम अभी भी अच्छी है, और अच्छी होती अगर ये गेम थोड़ी सी चीज़ों को और बदलाव कर लेता, जैसे इसके लोडिंग टाइम पे, जैसे इसके चीज़ें या कट सीन्स दिखाने का तरीका थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। बाकी गेम काफ़ी अच्छा है और इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हमको यहाँ पे ओल्ड मॉर्ग आ चुके हैं और ओल्ड मॉर्ग में हमको मेडिसिन को फाइंड आउट करना है और उससे एक एंटीसेप्टिक्स बनानी है फैटिक की, और उसको हम लोग एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। और ऑफ कोर्स ये बात है, इतना सिंपल ये टास्क होने नहीं वाला जितना सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमें कई चीज़ें अभी यहाँ पे मिलने वाली जिनसे हमको फाइट भी करनी पड़ सकती है। तो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या करने को मिलता है। गेम के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग गेम में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको भी एंजॉय करते रहिए। और मेरे को कल पता चला कि मेरी गेम वॉइस थोड़ी सी लो आती है, तो मुझको फिर से कमेंट पे आज थोड़ा सा बता देना कि क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गाइस कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मैं अगेन उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूँगा। और यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो पे आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है तो उस चीज़ को ज़रूर याद रखना और पूरा वीडियो देखना, काफ़ी मज़ा आने वाली। हम लोग एक ही गेम प्ले के अंदर 2 बॉस फाइट्स करने वाले हैं, तो बने रहिए इस गेम प्ले में मेरे साथ, मज़े करेंगे हम और आप मिलकर। तो भाई बस फाइंड आउट चल रहा है भाई फैटिक की दवाओं के लिए, एंटीसेप्टिक्स, केमिकल्स, हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे हमको दे दिया गया। फाइंड सम फेरस टार्ट्रेट एंड फाइंड सम क्यूनाइन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। और रॉन्ग टारगेट हमारा फाइंड आउट हु इज स्पाइंग ऑन द थैल्मा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आफ्टर द दिस इवेंट
मेरे को पता चलता है इस बारे में I क्या बात हो रही है। cannot अब ये वाला रूम हमारा लॉक हुआ है, तो इसके लिए भी हम लोग की थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। और जैसा मैंने बोला था कि इतना इजी नहीं होने वाला, हमको यहाँ पे स्कार्स दिख चुके हैं और स्कार्स को हमको मारना भी पड़ेगा। हो सकता है इनसे भी हमें कुछ चीज़ें मिलें, और काफ़ी इजी लग रहा होगा, बट इसके रियल में कंट्रोल काफ़ी टफ है भाई। आदत डालनी पड़ेगी भाई वापस से, क्योंकि भाई हम लोग कहाँ भाई शूटिंग गेम्स खेलने वाले हैं, और ये कहाँ भाई चक्कू वक्कू चलवा रहे हैं भाई, तुमसे चक्कू वक्कू चलवा रहे हैं। Behavior ये सब is अपने बस similar का to काम the है भाई, infected William Bishop. बस चला रहे हैं भाई। Must be the same strain. भाई मज़े ही This मज़े हो रहे हैं भाई, sickness मज़ा आ moves रही है faster भाई than गेम influenza. लिटरली भाई। थोड़ा सा गेम का मज़ा लीजिए, हमारी कमेंटेटरी चलती ही रहेगी, चीज़ों को एक्सप्लेन हम करते ही रहेंगे। सामने आई थिंक हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं This जिसको key हमको will लेना surely इम्पोर्टेंट grant me है। द access की to विल the श्योरली basement. ग्रांट मी एक्सेस टू द बेसमेंट। अब बेसमेंट की एक्सेस हमको मिल चुकी है, यहाँ पे एक्सेस की मिल चुकी है। जैसे मैंने बोला कि गेम में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमको खुद ब खुद ये गेम सब कुछ देता ही रहेगा। तो भाई चलो जल्दी से नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पे कुछ तो मिला। जल्दी जल्दी नीचे चलेंगे भाई, जल्दी जल्दी। एक और स्टार। I cannot enter.
behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. सो भाई जैसे मैंने बोला कि भाई इस गेम में काफ़ी चीज़ें आपको फाइंड आउट भी करनी चाहिए। तो हमने यहाँ तक अभी देखा था कि हमको एक मिल चुकी थी जो कि हमको बेसमेंट तक ले जाएगी। हम लोग बस जल्दी जल्दी से बेसमेंट पे जाएंगे, उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से करते हैं सारा काम, यही है हमारा काम, यही है हमारा धंधा। तो भाई शुरू करते हैं। आप चीज़ों को देखते हुए हमको यहाँ तक समझ में आ रहा है गेम। धीरे धीरे इस गेम को हम लोग समझ भी रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद खेला है और आई एम सॉरी फॉर दैट कि इस गेम को हमने बीच पे ही छोड़ दिया था काफ़ी टाइम के लिए। और भाई तो भाई आपको बता दो बहुत जल्दी हम लोग नए गेम्स के साथ आने वाले हैं जो गेम अभी तक आपने अंडररेटेड ही रह गए थे, और कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि 2024 पे आए हुए हैं और उसको कोई नहीं खेल रहा है उन गेम्स के साथ। तो आप लोग मुझे यार कमेंट पे बता देना कि उसको मैं स्ट्रीम करूं या फिर उसकी वीडियो डालूं। और अभी फिलहाल इस गेम का हम लोग फील लेने वाले हैं, बहुत ही जल्दी ये गेम कंप्लीट होने वाला। हमारे पास एक और बॉस फाइट आने वाली है आई थिंक, यस, बिकॉज मेरे को याद है अच्छे से, बिकॉज आई प्लेड दैट गेम। मैंने ये वाला पार्ट पहले भी खेला है गाइस। Traces of a pinkish foam at the प्रॉब्लम corner. ऑटो सेव लगा हुआ आई नो, बट नहीं हुआ था The क्योंकि मैंने ये chest was चीज़ मिस कर originally लिया था जो मैं अब opened to कर रहा perform the हूँ। यहाँ पे हमें एक operation. बॉडी मिली जो कि अपनी रिपोर्ट जो इसमें यहाँ पे बनाई गई है हमारे ही डॉक्टर्स के Multiple द्वारा abrasions वो and मैच scarring on the नहीं arms हो and रही है, legs. और ऐसा फील आ रही है इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा हो A और ये puncture चीज़ें over the left lung. गलत हैं। और खासतौर Possibly a पे chest माई tube ओपिनियन insertion. आर Not the cleanest work, but I think it was तो successful. हमारा जो हीरो है उसको भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, और बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर Signs उसने of देखा साइंस internal ऑफ द bleeding. इंटरनल ब्लीडिंग। So, डॉक्टर टिपेट्स की यहाँ Dr. पे बात Tippett's हो रही है जिन्होंने इसके anesthetics were ऊपर वर्क किया incorrectly था, dosed, और डॉक्टर causing the टिपेट्स की patient's ये death. प्रॉब्लम्स हैं, ये सब Then, उनका किया हुआ he है, tried और to डॉक्टर operate on टिपेट्स him को हमको again. अब देखना Tippett has पड़ेगा, उससे made हमको an पूछताछ करनी egregious. है। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी चीज़ आती है इस गेम के अंदर कि कई बार जब हम लोग It's लोगों से locked, all right. इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो एक अजीब सी वहाँ पे एक ट्यून सी बजती है, और ऐसा लगता है जैसे हमने सामने वाले के ऊपर हाइपोसिटिस ऐसे हाइपोथेसिस या कुछ भी किया हो। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि एक वैम्पायर है और वो ट्रुथ निकालना जानता है। तो उसने क्या किया है कि उनको ये फाइंड आउट करने की पावर दी गई है इस गेम पे कि वो जब कोई से कोई बात करता है और वो वाली जो ट्यून बजती है तो वो सामने वाला इंसान सच ही बोलेगा। सो ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन बहुत थी। और बस आई थिंक हमारे ये वाला लेवल भी कंप्लीट होने वाला है। हमारी 525 एक्सपी अभी हेल्थ नहीं सॉरी हेल्थ इधर दिख रही है, ये कॉइन्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग मेन गेट्स पे जाएंगे, मेन गेट पे। तो गाइस वेलकम टू द मेन इवेंट ऑफ टुडेज गेम। ये आया हमारे जॉन डो करके एक आया हुआ है, ये काफ़ी डेंजरस वैम्पायर है, इसका लेवल 8 है और 7 है और हमारा 5 है। देखते क्या हम इसको बीट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे बिकॉज वी आर द वैम्पायर। जल्दी कंप्लीट करेंगे भाई। ब्लड इसमें जितना आपके पास ब्लड बना लो आप उतना अच्छा होता है, इसलिए बार बार आप कोशिश करो इस चीज़ का। थोड़ा सा टफ है बट ये बॉस फाइट करने में मज़ा होता है कि आपको बस थोड़ा सा और गाइस कंप्लीट होने वाला है चैप्टर भी हमारा। और यस वी गॉट द विन वेरी इजीली। बड़ा इजी लग रहा है लेकिन बता दो इसको करने में मेरे को 2 से 3 ट्राइज लगे हैं भाई। 3 ट्राइज लगे हैं भाई, ये 3 बार मैंने इसको ट्राई किया तब जाके हुआ है भाई। हाँ वो चीज़ हटा दिया भाई, वीडियो लॉग थोड़ी करनी थी ब्रो। मैंने कहा था हमको फैटिक की दवा बनानी है, हमको जो चीज़ मिली जो फॉर्मुलेस मिले उसे हम फैटिक की दवा बनाएंगे यहाँ पे, और ये हमारी दवा कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको इस चीज़ को वापस मिस्क्रीन को देना है जाकर, बस इतना सा हमारा काम है। कितना बोलना आसान है लेकिन करने वाले की पड़ती है 4 बार। तो चलिए भाई सीधा मिस्क्रीन की ओर चलते हैं बहुत ही तेज़ी से 2-4 फाइट लेते। बट उससे पहले आई थिंक यहाँ पे कुछ तो होने वाला है गाइस।
Good evening, Miss Howcroft. I need blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Goodbye, Nurse Hawkins. I wonder what your last thoughts would be, sir. सो गाइस हम लोग आ चुके हैं पेम्ब्रोक हॉस्पिटल वापस से, और आज हम लोग सबसे पहला काम अभी आते ही करने वाले हैं नॉट नर्स से मिलना, डॉक्टर टिपेट से Good evening, पूछताछ doctor. करनी है मुझे उन्होंने ऐसा क्यों Dr. किया, और मैं Reid. उनको सच को के ही मानूं क्योंकि I am मैं through Strickland. Vampyr the Great। पहले कुछ पर्सनल Please, could you tell me क्वेश्चन something? What? चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, I- ज़्यादा वो चीज़ें को नहीं कर रहे हम लोग। बैक करेंगे अबाउट द What can पेम्ब्रोक you tell हॉस्पिटल, us? टेल मी अबाउट दिस एंड डू यू नीड You can द question- कंटिन्यूअस यू Oh, no, I see. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें निकल रही है, लेकिन अभी हमारी कोई भी चीज़ यहाँ पे निकली नहीं है। तो भाई ये रहा अबाउट योर Tell me more about your Willingness to willingness to experiment with the new experiment medical with new techniques. medical techniques. Harvey Fiddick is a Have patient fading suffering patients from a suffering severe from injury that could cripple him if not treated if not correctly. treated correctly. I'm convinced your blood transfusion transfusion technique could help him. What is it you really want? What is it To really save him? you want to Or to save or prove prove your your point? point? Fair question. A fair I want question. nothing but to I want save my nothing to patient, save my Dr. Reid. partner. That Especially since I know Mr. Freddy's Fiddick's story. The Freddick story? Tell me about the Tell me story of Mr. the Freddick Fiddick's story. Our first diagnosis The was diagnosis was compromised because compromised Mr. Fiddick medical lied to. records Why would he was hide? Because he is. तो मतलब यहाँ पे चीज़ें हमको This क्लियर part, होती है कि हम लोग do you जिस think डॉक्टर को all I- समझ रहे थे वो गलत नहीं था। एक्चुअल में उनकी थोड़ी सी कंडीशन ही ऐसी थी, वाइटल कंडीशंस थी, और उसके बेस पे उनको वही चीज़ करनी ही पड़ी और कोई Goodbye, ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग चांस चलते हैं अब सीधा मिस क्वीन की तरफ। जल्दी से मिस क्वीन के पास चलेंगे, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी आगे के काम करेंगे। रे भाई जल्दी करने का रे। Where is Miss Crane? ये रही। Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. Duty calls? Many thanks, Doctor. Let you down, my boy. Will this shift never end? Good evening, sir. I don't know if a third of... I see. I'm hard. Tell me. I'm just a... I was mo- I'm a... What? you know. Tell me about your injury, Harvey. Why do you... My wife died. How could your... I was working... Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the... What happened? The German... I'm so... I would like... How are you... They was smaller. Goodbye for now, Mr. I will not let you down, my boy. My sweet girl. I'm so tired. Never could keep anything from her. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea.
but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long... There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something... Please. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. A Unfortunately, spokesman or politician is what you need. discretion is in order, Jonathan. Lady... And you would like me to... By this... Accepted. Good evening, sir. So it is true. Do we Actually, yeah. Doctor? He was all... Have you heard? I have... Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis... Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man. Who was this patient? I don't... You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you... No. Nurse, you... What can you tell me? Stop. Don't get... Any opinion? Yeah. Don't get me... Tell No, you. I'll... Tell me more. No, You. I'll get... What This hop... It... Don't... Goodbye, Doctor. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. और You're in ये good रही हमारी hands here. शेरी We'll be up again soon शेर enough. ओ भाई साहब ये भी शायद डॉक्टर ही है आई डोंट नो अब एक चीजें Now क्लियर do ज्यादा me a है kindness and get फाइनली हम some लोग sleep. दोबारा I'll be मिले हैं back round later. तो अब चीजें शायद थोड़ी सी words क्लियर are हो kind, the कि blessings of an एक्चुअल में angel, कौन है or the और sweet, व्हाट sweet काइंड lady ऑफ of mercy. वैम्पायर शी इज लेट्स सी शी गोना टेल और नॉट
भाई एक्सप्लेनेशन वही Good वही होंगी evening, जहाँ Dr. जहाँ Reid. पॉइंट्स है डॉक्टर रेड It's a pleasure to see you again. ओ भाई You वेट seem वेट surprised. साड़े Dr. Vampyr Swansea होने has की भी brought me अपने up to फायदे speed साड़े concerning your recent appointment to Pembroke ओके Hospital. ओके 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 You're a vamp. अच्छा हाँ The इस lady गेम who में एक saved me सबसे that इम्पोर्टेंट night, पॉइंट बता देता हूँ before vanishing इस into thin गेम air. की भी एंडिंग्स अलग अलग हैं I remember you from the और pub उस with Dr. endings Swansea. को डिपेंड करता है आप इनके जो Indeed. आंसर्स करते हैं उन पे Allow me to और introduce myself मेरे formally आंसर्स तो this वैसे भी time. इनवैलिड ही है 90%। My name is आप लोग Lady जब इस गेम को Ashbury. खेलेगा तो थोड़ा सोच के आंसर I दीजिएगा। remember हम you लोग तो well, गेम प्ले से रिकॉर्ड करते हैं in और spite आपके of the लिए brevity लेके of आते हैं our नए नए encounter. गेम्स, तो हम लोग इतनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हैं, बट आप प्लीज़ उन चीज़ों पे फोकस करिएगा। मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, आई एम ग्लैड टू सी यू बिकॉज आई थिंक कि वो Apologies. बोलना थोड़ा सा ज़्यादा You've बेटर है taken me by actually surprise. asking about something I'm very happy to see you. The apologies. pleasure is mine, Pleasure is mine, doctor. Doctor. I think she's I going hope to you're tell- more disposed to answer my yeah. questions now. You must have countless questions, but our rather urgent Okay, matter यहाँ first. पे एक इशू है Swansea जिसको हमको has सॉल्व explained. करना है। आई थिंक My my cover cover, if you prefer if has you been prefer, compromised but has been okay okay compromised. ये कहना चाहती है इसका क्या हुआ है। आई एम हियर टू हेल्प Dr. यू। Swansea has एक्चुअल में इशू commissioned क्या है me to कि be your किसी ने agent in हॉस्टल this के matter. अंदर ही इसकी रियलिटी could देख ली start है by और explaining उनको what's ब्लैकमेल amiss. कर रहा है और ब्लैकमेलर को These हमको past पकड़ना है, उसको insufferable कूटना है, weeks, बराबर से सूतना है। I've ये been the हमारा victim काम of है। extortion. इनकी रियलिटी बाहर ना निकले वरना I've made a लोग जो इन पे first ट्रस्ट payment, कर रहा but है the वो भी नहीं हो blackmailer पाएगा grows greedy. और ये लोग एक्चुअल में अच्छा वर्क I कर रहे हैं must लेकिन लोग उनको refuse his एज most recent demands. मॉन्स्टर ही देखने वाले हैं बिकॉज ऑफ वंस अ मॉन्स्टर ऑलवेज बी अ मॉन्स्टर। Please रियलिटी continue. इज द फेयर Every detail Okay. is essential. So I'm let's your see man. what's going to be the My next. embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reid. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reid. And That man was determined to murder you. You almost died. what a surprise. The first time I met... How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton,
I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reid. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. I'll leave you. Good evening. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Good evening. Goodbye, Mr.
Good evening, sir. Doctor. Good evening. It's my son. I'm Dr. I'm Beatrice. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reid, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. What can you... Not much, just... May I ask... I'm a teacher by profession. Are you? Yes. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. Is there something in particular? Some of the... Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware... Good. I will not let you down, my boy. Don't waste your time with me. Daily routine. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I've already heard about you, Doctor. That's quite a... You can call... I'm not... Well, You have... No. Goodbye. I will not let you down, my boy.
Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patient. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reid. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett. I hope you're... Dr. Tippett. Goodbye now. Hey, Doc. I'll leave you. No time for self-pity. It is the last thing our patients need. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Goodbye now. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reid. No. No, you... Goodbye, Doc. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reid? I think of nothing else, my lady. My situation is delicate. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange... Let me guess. What can you... Let me get... Goodbye, nurse. Good evening, Dr. Tippett. Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Nurse. Good Goodbye.
Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. How long have you been searching for? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Don't be ashamed, Mr. Blight. What can you I'm Oswald's best friend. What can you tell me about... His name is Oswald Thatcher. This is a dangerous part of town. We were looking for the Where was your friend? He went down by the canal. I have all... Thank you, Doc. It's locked, all right. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. This man has been savagely attacked and dragged to the floor.
Feel the fresh air! Can't breathe! Can't breathe! Are you injured, sir? Help me get out of here! I need to get out! I'm Dr. Reid, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Are you sure you're... Yes.
वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं आज के सेकंड बॉस फाइट पे, द श्योर डॉग, जो कि काफ़ी इंटेंस बैटल होने वाला है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग उसे जल्दी बीट कर सकते हैं। और इसको हम आपको एक टेक्निक बता देते हैं कि कोशिश करिएगा कि बार बार आप उसको फाइट कर सको। जितना आपको मिलेगा ब्लड उतना बेनिफिशियल होगा इस गेम में, क्योंकि आप यूज़ कर पाओगे अपनी पावर। ये देख सकते हैं आप, किचन फाइट क्या लग रही है भाई, क्या फाइट है ब्रो, लिटरली ब्रो। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आप अपने रनिंग पावर को यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से, और वी कैन बीट हिम इजीली। बस रनिंग पावर करना है हमें, कोशिश जारी है गाइस, कोशिश जारी है गाइस, कोशिश जारी है गाइस। हमारा स्टैमिना को देखते हुए हमको सिर्फ काम करने होते हैं, लेकिन हमारा स्टैमिना ही बार बार स्लो हो जाता है। दोनों फाइट क्या लगता है गाइस, जीतेंगे या नहीं? ये फर्स्ट बैटल होने वाला हमारा आज तक इंटेंस। भाई उसका लेवल 9 है ब्रो, और अपना रेट उसका है। वी कैन बीट हिम नाइस। हमारे पास क्लॉ है, हमने क्लॉ को अपग्रेड किया, कुछ चीज़ अपग्रेड किए गाइस। अगर वीडियो पे आपने गौर से देखा होगा तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। हमने अपग्रेड भी किया अपने कैरेक्टर को, और आई थिंक मैंने उसको रिमूव ना किया हो तो, क्योंकि मैं कई चीज़ें रिमूव कर दिया, जो मैंने बताया कई चीज़ें काम से नहीं करनी जो टाइम वेस्ट आएगी। और वीडियो को यहाँ तक कोई आ ही गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और लाइक करो, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियोस नहीं और भाई मदद करते हैं भाई, जल्दी जल्दी करेंगे सारे काम। बहुत ही आराम से ये फाइट आप जीत सकते हैं लोग, जल्दबाजी ना करें। और फाइनली वी गॉट द विन, फाइनली वी गॉट द विन। तो लाइक मारो भाई, हमने एक और बॉस फाइट आज खत्म कर लिया है। लाइक मारो भाई, लाइक मारो, लाइक मारो। Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her.
कवर जो हमारा अंडरकवर कवरी है उसको हम लोग ढूंढते हुए एक अदर कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरे को पहला स्कार ही मिला वो 16 लेवल का था और यहाँ से मुझे समझ में आता है कि बहुत बड़ा टफ मोमेंट होने वाला है। तो इस गेम को हम लोग ज़्यादा अब नहीं खेलेंगे, अब काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रही है, आपको भी मज़ा नहीं आने वाला है। तो बस जहाँ तक हम लोग इसको आज कंप्लीट कर पाते हैं उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगेन आई एम सेइंग दैट, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो भाई मेरे को कमेंट में बताओ ना ब्रो, आई लिटरली वांट कि आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं एक्सप्लेनेशन भी वहीं देता हूँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बाकी आप गेम प्ले के फुल फ्लेजेड मज़े ले पाओ, इससे मैं कई जगह छोड़ देता हूँ और ये चीज़ें तो होती रहेंगी ब्रो, कोई बात ही नहीं है। जितना हमने खेला अभी तक बहुत ही मज़ा आया और आई थिंक कि आज हमको इतना ही रखना चाहिए। तो बस मैं यही बोलूँगा भाई, लास्ट में भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। यहाँ पे एक स्कार और है उसको निपटा देते हैं और सेविंग पॉइंट हमारा आने ही वाला है, सेविंग पॉइंट आना है तो हमको जाना है। यहाँ पे कोई है जिसको ये मारना चाह रहा था, आई थिंक उससे हम लोग ज़रा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ है कि नहीं वो चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के बाय। What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages.